all of you. Dr. Khushbu ma'am uh, has with us now. So, Dr. Khushbu ma'am, can we start the session? Everybody has joined. I can see Yes, 10 ma'am. people right now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone can join. Some are joining, but most of the people 10 have people are there, I guess. No. How many people are no. there? Ma'am, there is 24. Okay, I can see only 10. Yes, ma'am. Okay, ma'am. You can start, ma'am. Okay, thank you, Rushi. Thank you. Okay, ma'am. Good evening, everyone. I hope we all are doing well. Okay. Yesterday we stopped before meta-analysis. तब तक we covered our research problems, types of gaps, types of literature reviews we discussed, and examples also, and how a research problem should be designed, what are the characteristics, etc., etc. So today we'll start from meta-analysis. Just give me a second. My screen is visible, guys. Yes, ma'am. The screen is completely visible and Okay, you just are stop there. audible too. Yes, network is in favor today. Yes, ma'am. Okay, we stopped here. Prior to this, we covered all these things. We actually covered this as our last topic yesterday. Important questions that need to be addressed at each step. Afterwards, there is these guidelines to assess the quality of the literature review. So, step-wise, phase-wise, there are certain steps that you should follow, and you should measure your work corresponding to each of the points. Okay, so it is a guideline basically. So आप हर point के साथ you should compare your work, so that you know कि हर corresponding point के साथ आपका काम इस particular point पे क्या contribution कर रहा है. So there are different steps in each kind of phase: design, conduct, data abstraction and analysis, and then structuring and writing the review. In this paper, certain guidelines have been given as to how we should write our paper to grab the reviewer's attention. We'll discuss that also. I believe it is a very recent paper. It is a paper of 2019. So after capturing reviews from multiple editors and reviewers, they have given this comprehensive knowledge to all of us as to how we should improve and how we should be writing our literature reviews now onwards. Okay, yesterday we talked about writing systematic reviews. Guys, systematic literature review is the basis for writing systematic reviews and meta-analysis. Okay, so how do we go about writing these reviews in a systematic manner? So in stage one, which is planning the review, every process in the world starts with identification of the need. We all hail from these our own disciplines. I believe from management mostly. I'm assuming. So we all know the processes, or even if not management, then we must be knowing the process of certain things, process of decision making, process of developing some kind of software, process of management. So everything starts with the planning phase, wherein we try to identify the need. So in this is no different. This is no exception. So first of all, we need to identify the need for the review.
मुझे रिव्यू लिखना ही क्यों है. ओके, सो व्हाट इज माय नीड. यू कैन बी ए रिसर्चर. आपकी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको एक लिटरेचर रिव्यू पेपर पब्लिश करना है. दैट कैन बी योर नीड. और आई वांट टू बी, यू नो, आई वांट टू राइट अ वेरी साउंड टेक्निकल पेपर. आजकल मेटा एनालिसिस चल रहा है, क्वालिटी रिव्यूज बहुत चल रहे हैं. सो आई जस्ट वांट टू मेक माय कंट्रीब्यूशन देयर एज अ रिसर्चर. सो आई वांट टू राइट अ रिव्यू पेपर. Or I want to read more. I'm more into reading, I'm less into analysis. So I can read more, I can comprehend more, and I just want to present it in a very well defined manner. Hence I want to write a review. So anything can be your need. Then you got to prepare your proposal for the review. On what kind of topic you want to write your review, what type of review you want to write. Okay, who is your audience, what is the rationale. So you have to prepare a chota sa proposal, a kind of synopsis for your review. Then you develop the review protocol. Means as the steps, the process as to how you will be proceeding to write that review. What kind of rules you have to, you need to frame certain kind of rules before attempting that review. As we have seen, हर टाइप का जो रिव्यू था उसके अपने आप में कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं. सो वट एवर टाइप यू विल बी चूजिंग, आपको उसी के ही स्टेप्स आपको चूज करने हैं सो टू राइट द रिव्यूज. जैसे कि हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिजाइन होती है, रिसर्च डिजाइन होते हैं. सो हम जो भी डिजाइन चूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव या कंक्लूसिव या एक्सप्लोरेटरी या कंक्लूसिव के अंदर क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, तो हमें उसी के ही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, राइट. है ना. तो आगे तक भी सैंपल सिलेक्शन के लिए, सैम्पलिंग टेक्निक के लिए भी वी नीड टू follow certain kind of rules. So similarly we have to follow here also. Then we start conducting a review. So we identify, phase 3 is identification of research. So basically what research you want to address. Okay, what all research you want to include in your paper. Okay, so basically जैसे हम बात करते हैं सैम्पलिंग में पॉपुलेशन, फिर हम पॉपुलेशन से उतरते हैं सैंपल साइज पे. सो सिमिलरली इसमें भी एक बड़ा गैमेट ऑफ पेपर्स, एन नंबर ऑफ पेपर्स, जिसमें से मुझे अपने स्मॉल एन, एक कैपिटल एन ऑफ पेपर्स, एंड देन आई हैव टू एक्सट्रैक्ट सम एन, छोटा वाला एन काइंड ऑफ पेपर्स व्हिच आई एम गोइंग टू इंक्लूड इन माय स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द रिसर्च. अपनी स्टडी के हिसाब से बड़ा डोमेन रिसर्च, बड़े डोमेन थ्योरी स्टडीज आप आइडेंटिफाई करते हो. देन यू सेलेक्ट योर स्टडीज. ओके, सिलेक्शन के लिए गाइस वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स, हम उन्हें बोलेंगे एक्सट्रैक्शन रूल्स. ठीक है, सो कुछ रूल्स हमें लगाने पड़ते हैं, कुछ कैटेगरीज चूज करनी पड़ती हैं जिसके अंदर हम उन स्टडीज को सिलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे पेपर्स पढ़ने हैं, मैंने सारे पेपर्स डाउनलोड कर लिए. ठीक है, मुझे लगा कि मेरे जो उसमें आधे डोमेन में मुझे लगता है ये एन नंबर ऑफ लिस्ट है. मैंने कल वो जो डेटाबेस दिखाया था उसमें मैंने डाला अलग अलग डेटाबेस पे, और मुझे बहुत बड़ी लिस्ट आ गई, एक 200 पेपर्स की लिस्ट आ गई. ठीक है, नाउ एज अ रिसर्चर इट वुड बी वेरी टफ फॉर फॉर मी टू एड्रेस ऑल काइंड्स ऑफ स्टडीज. सो नाउ आई विल पुट सर्टेन काइंड ऑफ कैप्स. I would say I will study employee engagement in academic settings only. I am not going to study employee engagement for corporate or organizations. हमें नहीं पढ़नी, हमें academics में पढ़नी है. So एक कैप लग गया. academics के अंदर भी आपने जब उनको शॉर्टलिस्ट किया तो आपको पता चला कि करीब जो आपने पेपर सिलेक्ट किए उनमें 120 पेपर्स हैं academic से रिलेटेड. देन यू विल अप्लाई वन मोर कैप. यू विल से कि जो सिर्फ स्कोपस लिस्टेड हैं या ए स्टार वाले जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं पेपर्स, मेरे को बस वही पढ़ने हैं. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू. कितने भी आप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टोटल पेपर्स दैट यू हैव रिसीव्ड, यू कैन पुट एन नंबर ऑफ कैटेगरीज. बट येस, दे शुड नॉट बी दैट लेस कि आपको उन पर रिव्यू कर, आप सोचो 5 ही पेपर रह जाए लास्ट में, बस मैं 5 पेपर पढ़ लूं. नो, देयर हैज टू बी अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिव्यू पेपर्स दैट शुड बी देयर इन योर हैंड, कि आप उनको पढ़ के एक अच्छा रिव्यू, एक अच्छा assimilation of your concept, assimilation of the construct with all the variables आप उसको present कर सको. Okay, then study quality assessment. Basically what kind of parameters you want to apply to increase the quality. Okay, what you want to include scopus papers, you want to include A star. I don't know about the other disciplines, I guess IEEE और उसी के कैडर के some other categories that you want to include. आपने सिर्फ define कर लिया कि बस मुझे इससे नीचे वाले papers को नहीं पढ़ना. ठीक है, so there you can assess the quality of the papers to be included in your paper. Sometimes I have seen people conduct systematic reviews as per the country also. Okay, so for example मेरा कुछ काम है जो इंडिया को पर्टेन करता है. So मैंने कहा कि मुझे वो वाली कंट्रीज का रिव्यू करती हूँ जो डेवलपिंग कंट्रीज में ही हुआ है.
एक पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट मैंने उठाया और मैंने कहा कि मुझे इनको डेवलपिंग कंट्रीज में ही स्टडी करना है। सो एक ये भी पैरामीटर हो सकता है, आप इसको ज्योग्राफिकली भी आप इसको बाइंड कर सकते हो। सो उन्होंने उसमें क्या किया कि उनमें फिर वो कोड करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो हर पेपर का एक अपना कोड नंबर होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो कुछ कैटेगरी में आ जाएंगे इधर डेवलपिंग में, कुछ चले जाएंगे डेवलप्ड में, एंड देन दे एक्सट्रैक्ट दोज पेपर्स ओनली डेवलपिंग वंस एंड देन दे रिव्यू देम। सो हर स्टेज पे आपको नंबर्स भी मेंशन करने पड़ते हैं कि आई रिसीव दीज मेनी पेपर्स व्हेन आई फर्स्ट अप्लाइड, और यू नो व्हेन आई फर्स्ट इंसर्टेड दिस कीवर्ड इन द डेटाबेस, मुझे इतने पेपर्स मिले, फिर उनमें से मैंने ये वाले एक्सट्रैक्शन रूल्स लगा के मुझे इतने वाले पेपर्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए, फिर उसके बाद लगाया, एंड देन आई गॉट दीज मेनी पेपर्स एट द एंड जिनको मैंने रिव्यू किया। देन डेटा एक्सट्रैक्शन एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने बताया, आप कोडिंग करते जाते हो और हर स्टेप पे अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाते हो, अपने नंबर ऑफ पेपर्स एक्सट्रैक्ट करते जाते हो। जितने भी हम डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं कि आप लिस्ट बनाते हो, कीवर्ड्स डालते हैं, गाइस इनमें से नंबर ऑफ पेपर्स निकल के आते हैं, ठीक है, पेपर के नाम निकल के आते हैं, पेपर आपको डाउनलोड करने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए। सो आइडिया इज कि सारे पेपर ना डाउनलोड करते हुए जो लास्ट में आपके पास फाइनल लिस्ट बच जाएगी उसको डाउनलोड कर किया जाए, राइट। इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग 200 पेपर्स एट वन गो एट वन हैंड इन द फर्स्ट स्टेप, हमने एक्सट्रैक्शन रूल्स लगा के लास्ट तक हम आ गए। 25 पेपर अगर हमारे पास रह गए, सो आप 25 पेपर्स को डाउनलोड कीजिए। ओके, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव दी कुछ कैटेगरी सोच के, कुछ प्रोटोकॉल सोच के, कुछ रूल सोच के आप रखो दिमाग में कि जिससे आपको लास्ट तक ले जाना, एंड देन यू डाउनलोड द डिजायर्ड नंबर ऑफ पेपर्स। Okay, then you do data synthesis. Data synthesis is the assimilation of all the theories pertaining to your construct. आपने कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचा है उसको पढ़ने के लिए, एम्प्लॉय एंगेजमेंट को मैंने सोचा एकेडमिक सेटिंग्स में पढ़ना है, सो यू विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग योर रिव्यू नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दी जो फाइनल लिस्ट आपके पास रहेगी पेपर्स की उनके ऊपर। ओके, देन यू प्रिपेयर योर रिपोर्ट, यू गिव रिकमेंडेशंस। जो भी आपने ऊपर प्रॉब्लम एड्रेस स्टार्ट किया था, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन किया था, उसके बेसिस पे यू विल गिव रिकमेंडेशंस एंड गेटिंग एविडेंस इनटू प्रैक्टिस का मतलब व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर स्टडीज फॉर द कंसर्न्ड सेक्टर। आपने जो ये थ्योरी दी है, तो जब इसको हम प्रैक्टिकल चीज में ढालेंगे, हम प्रैक्टिकल चीज में इसको अप्लाई करेंगे, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। ओके, सो दिस शुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ योर एसएलआर। इनके गाइस कुछ इनकी कुछ और भी चीजें हैं जो दैट शुड बी देयर एज पर द रिव्यूअर्स, वी विल डिस्कस एट द इन द एंड। Okay, now I'll try to, I will try to give the introduction of meta-analysis to you. I just want to see मेरा download कहाँ तक पहुँचा. Just wait a second. I don't know why my SPSS is not working. Wanted to show you something about reliability things that we have to cover today. So in this laptop, I did not have SPSS, so I just thought to download it. Can we send SPSS? May I help to download this link if you send me? So how will you send me back the software? Ma'am, I share my screen if you want from any desk software. Acha, okay, Urushi. 1 second. If you are comfortable. You don't have SPSS on your system? I have. है मेरे पास SPSS ना आपके पास? हाँ जी। तो ठीक है, I am sending you a data file, so when we can coordinate on this together then. ठीक है? You are comfortable? I will mail the data file. हाँ, and I will ask you to share your screen at that time when I'll be introducing that topic, and we can proceed step by step then. Okay, cool. Thank you so much. Meanwhile, अगर ये हो जाता है download तो well and good. Done. Anytime, ma'am. Anytime. Thank you. Okay. Guys, first things first, meta-analysis में बहुत सारी books available है हमारे पास, but these 3 books are basics one, and they have been suggested by many experts also. So first one is by Higgins et al. I don't know, we Hedgers and Higgins के नाम से हम इसको बुलाते हैं, because इनके नाम से सॉफ्टवेयर भी है मेटा एनालिसिस का, इनका अपना डेवलप्ड. सो इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस ये इसी सीरीज में ही लिखी गई है जैसे इन्हें पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस इज द फर्स्ट वन, फाउंडेशन बुक एज वी कॉल इट. सो बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, काफी लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन्ड हैं, सो दे शुड बी फाइन टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मेटा एनालिसिस फर्स्ट. देन कम्स द सेकंड वन,
मेथड्स ऑफ मेटा एनालिसिस, इनमें अलग अलग मेथड्स के बारे में बात है, एरर, बायसनेस, रिसर्च फाइंडिंग्स, रिपोर्टिंग के बारे में बात की गई है, कैसे लिखना होता है. एंड देन थर्ड बुक इज मेटा एनालिसिस. इट इज बेसिकली मेटा एनालिसिस सेम. सो मेटा एनालिसिस की एक स्पेशलिटी है, जब आप उसे किसी चीज के साथ कंबाइन करते हैं तो उसका नाम वैसे ही बन जाता है, मेटा CFA, मेटा सेम, मेटा मीडिएशन एटसेट्रा, मेटा मोटिवेशन. सो दिस बुक इज अबाउट मेटा सेम. ओके, मेटा एनालिसिस इज अ टेक्निक जो कि हम लगाते हैं क्वालिटेटिव पेपर्स पे. ओके, वी बेसिकली अप्लाई इट ऑन द कंसेप्चुअल पेपर्स, right? Now you can ask in the third part, the book is about meta-analysis plus SEM. SEM is a quantitative technique. Yes, you can always work on the mixed methodologies. No researcher today would advise you to work only on single methodology. Yesterday I also discussed when I told you how reviewers of good papers have been talking about our paper when they gave feedback about our paper. So they said you should always work for the mixed methodology. So one part of your paper is working towards addressing the qualitative paper or secondary studies, and the second part is working for the quantitative thing. So when you have combined meta-analysis of the studies along with the SEM in your paper, we call it meta-SEM. So the reporting of the same thing is somewhat different. So what is meta-analysis? We discussed somewhat yesterday, analysis of analysis. So one paper, it has done certain kind of study in one field, another paper in the similar field, but some other kind of results were found. Similarly, n number of studies in one field that have been conducted. So what I am doing, I am trying to compile all of them to present one kind of analysis so that we can compare those studies. ठीक है, हम उनको एसिमिलेट कर रहे हैं, सारी स्टडीज को मिला के बेसिकली एक फ्रूट जूस बनाना है हमें, तो हमने सिमिलर सिट्रस फ्रूट्स को इकट्ठा करके उनका जूस बनाया. ओके, सो दैट आई कैन हैव वन एसिमिलेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ फ्रूट इन माय हैंड, राइट? सो इसका मतलब क्या होता है? आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू अ पेपर. So an objective and quantitative methodology for synthesizing previous studies and research on a particular topic into an overall finding. Now, objectively, we are trying to measure the qualitative work. We all know qualitative work, secondary studies are usually subjective. Okay, subjective as in they represent different opinions, okay, of people. They represent different point of views of the authors. So what we are trying to do, हम उनको quantitative तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं so that objectively उनको हम assess कर सकें. Objectively means on the basis of the facts, on the basis of underlying facts, we can assess them. Okay, so it is a quantitative methodology because हर चीज को numbers में convert किया जाता है, and always it is on one particular topic. ओके, सो ऐसा नहीं है कि अगर मैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट को पढ़ना चाह रही हूँ तो मैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट का रिलेशन अगर एम्प्लॉय एट्रिशन से देख रही हूँ तो आगे चलते चलते मैं उसे कहीं और आई जस्ट डाइवर्ट फ्रॉम माय टॉपिक और मैं कमिटमेंट या मोटिवेशन पे पहुंच जाऊं क्योंकि मुझे लगा वो सिमिलर है. नो, इट हैज टू बी डन ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक थ्रू आउट. Okay, because at the end we are trying to find one overall finding for all those studies. So it allows us to collect, code, compare and combine results from different studies, and we interpret them using statistical methods, facilitating statistical guided decisions about the strength of observed effects and reliability of results. Okay, when to go for meta analysis? कब करनी चाहिए meta analysis? First of all, जब आपका topic select हो चुका है, you have decided your construct very concretively. Okay, बहुत काफी analysis के बाद, rational study करने के बाद, need recognition के बाद आप अपना topic final कर चुके हैं. Okay, then you should proceed for the next step. Construct define topic broad domain topic define होने के बाद we will try to define our variables जो भी हमें उसमें पढ़ने हैं. एम्प्लॉय एंगेजमेंट का रिलेशनशिप पढ़ना है किसी के साथ, 2 वेरिएबल पढ़ने हैं, 3 वेरिएबल पढ़ने हैं, कितने भी n नंबर वेरिएबल्स आपको पढ़ने हैं. सो यू हैव टू डिसाइड देम फर्स्ट एंड देन यू हैव टू कंडक्ट दी SLR का अपना एक पूरा प्रोसेस है दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. सो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया एंड देन यू विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. आप उस कैटेगरी में अपने डेटाबेसेस पे सर्च करेंगे, अलग अलग लिस्ट में पेपर्स आएंगे, देन यू विल apply certain kind of rules and then you will extract the papers. Okay, so guys की जरूरत ही क्यों पड़ी वैसे हमें मेटा एनालिसिस की? So there is an interesting story.
गिवन इन द बुक इटसेल्फ, जो पहली बुक मैंने आपको बताई उसी में दी हुई थी, कि क्या हुआ कि वंस दीज यूएस सेनेटर्स मतलब जैसे अपने वो पार्लियामेंट में, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, तो उनकी पार्लियामेंट में देयर वाज दिस डिस्कशन. Okay, so when they discuss all good things. So way back in US, the senators were discussing the effects in or the policies of education. So they said कि social sciences जो researchers होते हैं, they are never talking on one ground. वो हमेशा अलग अलग बात कर रहे हैं. So मतलब one of the senators said कि there would be one social researcher who will be giving his own theories about certain thing. Then after some time another researcher will come in the same field, and he will give some other kind of theory. Then another will come and he will give another kind of theory. So our funds, our money is going on these theories जिनका कोई conclusion ही नहीं निकल रहा है. सारे लोग मिलके एक चीज को सही नहीं बता रहे हैं, राइट? सो सारे लोग अलग अलग चीजों को सही बता रहे हैं. सो इसका क्या, हम इससे क्या पॉलिसी निकालें? मतलब अगर हमें वो प्रॉब्लम एड्रेस करनी है, फॉर एग्जांपल हमें पता करना है कि भाई जो हमारे सिविल राइट्स हैं सिटीजन्स के, वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से फॉलो क्यों नहीं करते. अब इसके बारे में सोशल साइंस रिसर्चर्स आएंगे एंड दे विल बी प्रेजेंटिंग देयर डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी अबाउट इट. कोई कहेगा कि वो हमसे परेशान है, गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं. कोई आके बोलेगा कि इट इज देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम. कोई कहेगा कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं है. सो व्हाट इज द ग्राउंड रूल? मतलब इनको सेटल कैसे किया जाए? मतलब ये तो सो दे डिसाइडेड टू वेव ऑफ 80% ऑफ देयर फंड्स ओवर सोशल साइंसेज रिसर्चेस. उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे, हम सोशल साइंस रिसर्च वालों को पैसे 80% पढ़े इनका खत्म करो. When there will be a restriction in fund, they might come up with certain good findings good for the society. So from there onwards, it started ki okay, social science researchers said okay, don't take our money away. We will try to find one good solution for this. So in 1900s, Carl Pearson suggested this idea कि why don't we combine all these studies. दो ठीक है, मुद्दा तो एक ही है ना. मुद्दा तो यही है कि सिटीजन सिविल राइट्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे. मेथोडोलॉजीज अलग है और तरीके अलग है, पर बात तो उसी की कर रहे हैं ना. सो व्हाई डोंट वी कंबाइन ऑल दी स्टडीज एंड टेक वन जस्ट आउट ऑफ इट. ओके, सो व्हाट डिड दे डू, व्हाट डिड ही सजेस्टेड? उन्होंने कंसेप्ट सजेस्ट किया एंड देन इट वाज टेकन फॉरवर्ड इन 1976 बाय जीन ग्लास. सो जीन ग्लास सेड कि ओके, एक सिंगल यूनिट ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें हर चीज को कन्वर्ट करोगे तो उसका उसी में ही कुछ प्रोपोर्शन दिख जाए. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दो चीजों के बीच में कोरिलेशन था कुछ, उसके अलावा उसमें और दूसरे वेरिएबल में भी कुछ कोरिलेशन था. हमने सिटीजन के सिविल राइट्स का कोरिलेशन निकाल लिया बाकी सारी चीजों के साथ. अब हमने कहा अब इनको कंपेयर कैसे करोगे? बात तो ठीक है एक ही हो रही है, बट कनेक्शन तो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ है. इनको कंपेयर कैसे करेंगे? उन्होंने कहा हर चीज को एक और यूनिट में कन्वर्ट कर दो. So relation 1 was converted to x unit, relation 2 was converted to x unit, and relation 3 was converted to x unit. ठीक है, now everything is presented in one form of unit. अब एक तरह की यूनिट आ गई, अब इनको कंपेयर करो. एंडी फील्ड की बुक, if somebody has, I might be having a PDF, not right now though. In my laptop, I might be having one good book of Andy Field. Andy Field की बुक में हर चैप्टर के लास्ट में of meta analysis he has given this idea of converting the units to one standard unit so that you can compare them. So what do? They convert all kinds of relations, all kinds of R usually, to one kind of unit so that you can compare them fairly. Okay, अब वो उन्होंने एक यूनिट में उसको कंपेयर ढाल दिया, एक यूनिट में उसको कन्वर्ट कर दिया. नाउ यू गो एंड कंपेयर. जिस यूनिट में उनको कन्वर्ट किया गया उसको हम बोलते हैं इफेक्ट साइज. सो व्हेन ऑल दी डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, relationships are converted to one comparable kind of unit, that is known as effect size in meta analysis. Very very important. बिना इफेक्ट साइज के मेटा एनालिसिस नहीं होती. ओके, बिकॉज मेटा एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट यही है कि हमें बहुत सारी स्टडीज को कंबाइन करना है. सो जब हम उन्हें कंबाइन करेंगे, एक यूनिट पे लेके आएंगे, तभी वो बात होगी. और इफ वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इफेक्ट साइज, then we will be unable to compare them. We cannot compare apples with oranges for sure. So we have to convert them to some intermediary kind of a fruit. तीसरी तरह के फ्रूट में उन्हें कन्वर्ट करोगे तब कहीं जाके हम उन्हें कंपेयर कर पाएंगे. Okay, so basically Andy Field has rightly said it. Effect size is the common currency of meta analysis. He defines it as a common currency. Okay,
उनकी बुक में इट इज देयर कि आप हर चीज को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 1 यूनिट. ओके दिस भी हाँ. रूट्स ऑफ एसएलआर गाइस, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की 4 रूट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. आई टोल्ड यू कल व्हेन यू नो वी आर exploring the work, exploring our construct author wise. Okay, उसे bibliometric analysis बोलते हैं. Meta analysis, the one we are discussing right now, and then content analysis. Content analysis आजकल बहुत बहुत हिट है. आपने देखा भी होगा content analysis हम different softwares के through we are trying to attempt. लोगों के opinions, लोगों की बातों को we are trying to capture, right? जो चीजें अभी तक नहीं पॉसिबल थी, सब्जेक्टिव ओपिनियंस को कंपेयर करना, मेजर करना, एनालाइज करना वाज अ डिफिकल्ट टास्क. इट इज स्टिल डिफिकल्ट, बट स्टिल नाउ वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स और सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स जिनसे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, सो कंटेंट एनालिसिस अपने आप में इट इज अ डिफरेंट फील्ड. Okay, then how do you do this? How to do meta-analysis? What is the procedure? First of all, systematic literature review. जो हमने अभी पढ़ा स्टेप वाइज. बेसिकली मेटा एनालिसिस फोकसेस ऑन ऑल लिटरेचर. अगर आप कहोगे कि मेटा एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए, तो सामने से जवाब आएगा सब कुछ. आपको मेटा एनालिसिस करने के लिए सब कुछ चाहिए, राइट? आपको मेटा एनालिसिस करने के लिए प्रोसेस भी चाहिए, रूल्स भी चाहिए, पेपर्स भी चाहिए, डेटाबेसेस भी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए, और रिपोर्टिंग वाले पेपर्स भी चाहिए, एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी चाहिए. ओके, सो बेसिकली यू नीड एवरीथिंग फॉर राइटिंग मेटा एनालिसिस. So it will focus on all kind of literature. सबसे अच्छी बात ये है मेटा एनालिसिस की कि सिर्फ रिसर्च पेपर पे ही नहीं फोकस करता है, उसके अलावा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, आर्टिकल्स, इट कैन इवन काउंट योर रिजेक्टेड पेपर्स फ्रॉम द रिव्यूज आल्सो. ओके, जस्ट टू गेदर ऑल काइंड ऑफ ओपिनियंस, इट कैन कैप्चर दोज आल्सो. उसमें वो वाले पेपर्स भी आप मेटा एनालिसिस के लिए कंसिडर कर सकते हो. ओके, so whatever studies have been there since 20 years 10 years, आपने आजकल देखे होंगे literature review papers अगर. So now people pick one construct and they talk about its evolution in 30 years or 20 years. इतने साल के papers they review and then they come up with certain kind of theory about that construct. Okay, we'll talk at the end. वो theory भी काम की होनी चाहिए. You just cannot write anything about it. Okay, then you compile your results of these studies in a format. आप इन सभी स्टडीज को एक फॉर्मेट में डालते हो. फॉर्मेट भी अभी हम आगे देखते हैं एक पेपर में भी. एंड देन यू कन्वर्ट ऑल स्टैटिस्टिक्स टू इफेक्ट साइज. वी जस्ट डिस्कस्ड कि जो इफेक्ट साइज है दैट इज द कॉमन करेंसी. आप उसमें कन्वर्ट करते हो सारे स्टैट्स को उन सभी पेपर्स के, एंड देन यू कैन फीड इट टू सॉफ्टवेयर. You will get certain results to report and then you can report your results according to the reporting standards of meta-analysis. इनके लिए भी अलग अलग पेपर्स हैं हाउ यू शुड बी रिपोर्टिंग योर रिजल्ट्स, तो उनको रेफर करके यू कैन राइट योर समरीज. दिस कैन बी दी वन ऑफ द फॉर्मेट्स. दिस इज नॉट द ओनली फॉर्मेट. फॉर एग्जांपल हमने सीरियल नंबर वाइज काफी सारे ऑथर्स, ईयर वाइज, सैंपल साइज लिखे उनके, और हर एक ऑथर ने 2 वेरिएबल जो मेरे टाइटल में हैं जिनमें मैंने रिव्यू किया थ्रू आउट, उनका मैंने कोरिलेशन लिख लिया. ओके, सो 2 वेरिएबल्स में ऑथर वाइज XYZ samples पे क्या क्या correlations निकले हैं. Okay, then at the end I can compile all these correlations, can convert them to effect size and then can compare. Here I would like to show you one paper. काफी फेमस पेपर है. टैम मॉडल सुना होगा आपने, शेपर्स एंड विट्जेल. डाउनलोड हो रहा है बिलीव. लेट्स सी. Okay. Okay, guys. This is the meta-analysis of TAM, Technology Acceptance Model.
2007 का है, but still a foundation paper to write meta-analysis. So they framed these research questions. They tried to introduce subjective norm in the already established model. एक मॉडल पहले से ही बना हुआ था, उसमें they tried to include subjective norm also. Then they framed their research questions according to meta-analysis. You can see that they have used effect sizes in their research questions also. Then they have these studies जिनका description they have included. कि meta-analysis में कौन-कौन सी studies they have used and what are the characteristics of those studies in terms of authors, sample category, because it is a technology-based paper, so they have divided them into अलग-अलग categories, non-microcomputer, etc. Then what was the details? What were the demographics of your sample? Respondents के क्या demographics हैं? कहाँ से belong करते हैं? Then population, then country wise and then culture wise. So कल हमने बात की थी 7 types of gaps. Okay, so कहीं ना कहीं काफी सारे gaps को address कर रहे हैं. This is the thing that I was telling you yesterday कि आप एक बार में multiple gaps को भी address कर सकते हो, table बना सकते हो. Then they have done this correlation analysis, correlation of formula they have mentioned. Okay, this is their descriptive statistics table जो उन्होंने सारी studies को combine करके एक study बनाया, table बनाया. So what they are saying कि this particular variable relation की 24 studies they they undertook. क्या range of correlation था? Maximum correlation was found to be 0.6, minimum was 0.16. 22 studies significant थी, 2 studies non significant थी out of 24. Percentage of significance क्या था? Sample size minimum 43 था इन studies में, 471 maximum था. Cumulative sample size was this and average sample size was this of all the studies. So that is how you can produce your descriptive statistics table while writing meta-analysis. Now all these numbers जो भी हर category के लिए जो भी papers आए हैं आपके, they need to be very concrete. ये आपको हर step पे calculate करने पड़ते हैं. राइट इनको आपके जो भी टोटल नंबर ऑफ पेपर्स होंगे वो ये होंगे जो इनको कंबाइन करके बनेंगे. सो यू कैन सी कितने नंबर ऑफ पेपर्स दे हैव स्टडीड टू राइट दिस मेटा एनालिसिस. दीज ऑल पेपर्स दे हैव स्टडीड. हर एक पेपर को एनालाइज किया है. तो आप देख रहे हो कि इनको अलग अलग कैटेगरीज में दे हैव एनालाइज. तो जब ये इसे बना रहे होंगे तो उनकी कोडिंग भी इन्होंने ऐसे ही की होगी. इस वाले रिलेशनशिप को अलग कोड दिया होगा पेपर्स को, देन सिग्निफिकेंट वालों को अलग कोड दिया होगा, नॉन सिग्निफिकेंट वालों को अलग दिया होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि SN2PU जो रिलेशनशिप है ये A है मेरे लिए, सो सिग्निफिकेंट माइट बी A.S एंड नॉन सिग्निफिकेंट माइट बी A.NS. तो आपको ऐसे कोड दे दे के अपने पेपर्स को डिवाइड करना होगा सो दैट यू कैन राइट एट द एंड. राइट सिमिलरली लोअर अपर भी 24 पेपरों में से दे हैव कंक्लूडेड कि कितने पेपर में मिनिमम गया, मैक्सिमम गया एंड परसेंटेज सिग्निफिकेंट क्या था. Okay, so all these things you have to write down, you have to code side by side when you are reading each one of the papers. Then pair-wise relationship they have calculated, that must be there in the papers. Moderate analysis उन्होंने किया है, so you need to basically write those papers also जो कि आपका टेस्ट पास नहीं किया. For example, these are the relationships not passing the fail safe and test. जो भी moderator analysis के लिए उन्होंने टेस्ट अप्लाई किया है, that could जहाँ पे भी स्टार लगा है, those studies could not pass, so they need to mention them also. After selection जो मेरी फाइनल 50 स्टडीज आ गई हैं, अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम है, उनमें भी मुझे एक्सक्लूजन करने पड़ेंगे, then you have to report them also. Then they have used SEM in this because they want to discuss the role of subjective norm in the model. So they included subjective norm and they calculated SEM, meta SEM they did it, they did in the paper and hence they presented their results. Guys, it is a very good paper to write the analysis also. And
theoretical model की हमने एक दिन बात की थी पहले. Theoretical model भी how do we frame that we can see. Then if we are if we are referring to a good paper, then always remember जो उनमें references दिए होते हैं बुक्स के या पेपर्स के या कट ऑफ्स के, वो भी आप आराम से यूज कर सकते हो. ओके, दे हैव गुड क्रेडेंशियल्स एंड यू कैन यूज दोस पेपर्स एज योर रेफरेंसेस आल्सो. ये पेपर आई विल फॉरवर्ड आप लोगों को, आप इसे पढ़ सकते हो. You can go through it and you can, I don't know if they have given their code sheet at the end. Sometimes authors give their code sheet also at the end. कि उन्होंने कोडिंग कैसे की है. No, they have not given. Otherwise, you will get to know कि coding, how do we do it side by side. आई गेस थोड़ा काफी हो गया उर्वशी, आई गेस चल जाना चाहिए अगर चलेगा तो. लेट्स सी. ओके, then we come to this software part of meta analysis. Proprietary software है हमारे पास एक, इसका नाम है comprehensive meta analysis. महंगा है, कॉस्टली है ऑफ कोर्स. जिनकी बुक है उन्हीं का ही ये अपना सॉफ्टवेयर है. देन वी हैव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है गाइस कि ट्रायल बेस पे हो सकते हैं कुछ, ठीक है, या कुछ फ्री भी हो सकते हैं. हमारे पास जो इसमें एक अच्छा है मेटा एसेंशियल, जो कि फ्री है. मेटा एसेंशियल में दे हैव डेवलप्ड दिस एक्सेल शीट टू डू योर मेटा एनालिसिस. ओके, सो मेटा एसेंशियल इज डेवलप्ड बाय Erasmus Research Institute, Institute of Management, University of Rotterdam, I guess. So they have developed this Meta Essentials workbooks for meta analysis. आप इसको आराम से सर्च कर सकते हो, लिंक भी आ रहा है. I don't know if it is link clickable. Oh, sorry. Sorry, link is there. I was trying to click it. Link is there, or otherwise you can easily find it. ठीक है, आप इसे सर्च करेंगे गूगल पे, you can find the link directly and you can download it. They have this user manual also and they have tutorial also. And if you will open this website, you can see they have given the meta analysis के step-by-step process that needs to be followed while you are conducting meta analysis. Pretty good people out there. So you can see थोड़ा बहुत इसी में दिख रहा है. You can download the software. You have these PDF online for the manuals. Meta analysis को interpret कैसे करना है results को, that is also there. Step by step procedures are also there. Tutorial about each of the formulas or the tabs given in the software is also there. Okay, so you can go and you can check the software if you wish to perform meta analysis. Okay guys, today we have to start questionnaire designing. Okay. Right. Whenever you are trying to download certain papers, जिनमें आप कभी देख रहे हो कि कौन सा पेपर डाउनलोड करूं कि देख पाऊं कि स्टैंडर्ड how you should be reporting your results. What are the standard papers that you should be following to write your results, to report your studies. आप गूगल कर रहे हो या गूगल स्कॉलर कर रहे हो या पर्टिकुलर डेटाबेस से अगर डाउनलोड कर रहे हो, always download the papers which have the maximum citations. आप अगर गूगल स्कॉलर पे टाइप करते हो तो नीचे आ जाता है cited by, गूगल में भी आ जाता है, ठीक है. तो cited by, if it is by maximum number of people, then you must have that paper. So whatever for your particular field, when you are trying to see what kind of standard you should follow, how you should be interpreting, writing your results, you can always follow those papers which have been cited maximum number of times.
They have good credibility. Okay, so we all are aware about this particular term, questionnaire. What do we mean by questionnaires or surveys, as we call them? You also speak for some time now. Instrument which is used to gather information. Right, research instrument we can call it. Do we know the difference between surveys and schedules? Quite common difference. Guys, what is the difference between surveys and schedules? I'm pretty sure पता होगा किसी को. जैसे survey is like the range for the variables, coming variables, number of variables that occurs in one particular time, one particular date, and one particular place. Those are kind of surveys. Schedule is like meeting what's going to happen on one particular day from the beginning, having one or two variables like time, how much time will take, like classes, Tuesday will be recurring, or yeah, that kind of is called schedules, and the other is the surveys. Okay, sir. There was a slight difference. Surveys, you are perfectly right. Surveys are when we have prepared this questionnaire and we are administering the questionnaire to our audience, to the concerned audience, and we are asking them to fill it. Whether we are doing it in the physical form, जाके भरवा रहे हैं, या हम Google से भेज रहे हैं, whatever, it is a survey. Schedule would be, for example, if you have to conduct a study in a rural area and or some another language speaking area, and now you being a researcher, you want to address that particular locality. आपने क्वेश्चनर बनाया, लेकिन आपको पता है आप सर्वे अगर उन्हें एडमिनिस्टर करोगे, उनको दोगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे. They will not be able to read it. So either if it is आपकी लैंग्वेज एरिया है अगर वो, तो आप गए, आपने उनको पढ़ पढ़ के सुनाया. फॉर एग्जाम्पल कुछ लेबरर्स पे स्टडी करनी थी, सो उन्होंने कहा भाई हम नहीं पढ़ सकते, वी आर नॉट पढ़ा लिखा, तो यू आस्क. बट हमारा टारगेट पॉपुलेशन वही है, तो वी हैव नो चॉइस. सो हमने कहा पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और आप मुझे बताओ कि आपका इसमें रिस्पॉन्स क्या होगा. सो आपने क्वेश्चंस उनको पढ़ के सुनाए और उन्होंने आपको रिस्पॉन्स बताया और आपने रिकॉर्ड कर लिया. इसको हम बोलते हैं शेड्यूल. When you have a survey questionnaire in your hand, you are asking, you are telling your respondents what the question is about, you are taking their responses and you are recording yourself. Okay, whatever they are telling you. Now it is about, मतलब it is your genuineness कि आप उसे कितना ठीक से record कर रहे हो. But when you are recording their responses on their behalf. Similarly, अगर आप किसी और language speaking area में हो, तो आप you can always carry one translator with you. Okay, so you ask the translator to tell them the question. He will take the record, he will tell you, and then you can jot down their records on the survey sheets. So that is known as schedule. When you your help as a researcher is required to take out the answers from the respondents. So questionnaire, the basic definition, we all know they are the objective means of collecting information about people's knowledge, perceptions, attitudes, behaviors. So basically we are asking a set of questions to take out the responses out of the concerned respondents. या कुछ examples लिखे हुए हैं. For example, हम सीधा सीधा feedback ले रहे हैं किसी से. Do our patients like our opening hours? कार सेल्स के बारे में, शोरूम्स के बारे में, if you are taking your feedbacks, मैकडोनल्ड्स आप जाते हो या आप किसी ईटरी जॉइंट में बैठे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे आपको फीडबैक वो मिलते हैं, फॉर्म्स मिलते हैं. What do teenagers think of a local anti-drug campaign and has it changed their attitudes? So, drugs का problem कुछ states में, out of India, if you are conducting some kind of study on millennials, not only this, but if you are trying to catch their perceptions about this online platform things during COVID.
Then why don't doctors use computers to their maximum potential, or our senior banking professionals not using, whatever, whenever we are trying to capture certain kind of perceptions, opinions from people. Okay, so ma'am rightly said they are the research instruments and we can use them in different research designs. So this is one, for example, a simple question as simple as like if you would like to go for a coffee with me. So don't try this at home. Don't try to give these options. This is just for fun. Okay. Certain Ma'am, times. Sorry, sir. I had a problem with these surveys because, like, we ask students to go and ask the question, especially at Oxford Street. Every day we have, like, in Delhi also, I came up, even Kothari sir, he made it, he asked me to fill the surveys, online survey. He was doing some research, HR department Right, of sir. Dias. Right, sir. Right, sir. How we can overcome a bias that we have, behavioral bias in the survey. How we can overcome that problem? Because people during COVID pandemic, we have used mostly random sampling. However, Right, sir. there are people are biased. The technology is not biased, but people basically they are biased. They Right, right, either sir. will say Congress or BJP, or they will choose one or other, and that's we don't get a correct survey. Right, How we sir. can Right. overcome? Right, sir. I will talk about the biases also, though I'm not including them in the slide, but yes, I'll talk about it. Sir, first of all, I feel when you are administering a questionnaire or survey to somebody, there are certain things that are on the researcher's part and there are certain things that are on the respondent's part. So on the researcher's part, first of all, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चनर ठीक से बनाने की और उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टैब्लिश करने की, सो दैट जो हम कैप्चर करना चाह रहे हैं वही कैप्चर हो, ठीक है, और जिस कंसिस्टेंसी से वी वांट आवर रिजल्ट्स, वी वांट आवर रिकॉर्ड्स टू बी देयर, उसी कंसिस्टेंसी से वी गेट इट. सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर कि वो अपनी बात ठीक से समझा पा रहा है. रिस्पॉन्डेंट के बेसिस, रिस्पॉन्डेंट के एंड पे सर वी वुड लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्युइनिटी, कि वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके अपना जेन्युइन रिस्पॉन्स दे. Not like they are making certain kind of patterns in the questionnaire 1 2 3 4 1 2 3 4 या 3 3 3 3 for no mean for just for fun. Okay, और sometimes the biggest bias, the biggest error जो कि हमारे क्वेश्चनर में आता है सर, वो होता है social desirability का. Sometimes people fill their surveys, people fill their questionnaire not on their basis, वो इस बेसिस पे उसको भरते हैं कि क्या होना चाहिए. So I remember when I was conducting मैंने अपनी thesis का जब काम किया था, so I worked on faculty engagement. So I had these questions in my questionnaire that I am open to changes, I am open to I'm open to teach at various different institutions, I am ready to take transfers even if they mean my promotion. So there were questions like that. So my father-in-law is a retired professor from Faculty of Law, DU. So I thought घर पे try करते हैं पहले reliability validity questionnaire की. So I administered my questionnaire to him. So I know him. I know I can map his mind. I know him. But when he started filling that questionnaire, he started feeling like क्या होना चाहिए. So I am pretty sure he is not comfortable to go out at different institutions and teach. He is only comfortable to teach at DU at his one given faculty department. So, but he still take down strongly agree. Yes, multiple institutions पे जाके पढ़ाना चाहिए. Then I am pretty sure he will never take any kind of transfer, even if it means his promotion. He will deny the promotion, but he will not transfer from the place. So उसके लिए भी he wrote strongly agree. So when I analyzed his questionnaire and I asked him कि डैडी मतलब I'm pretty sure you are not going to do any of these. So why strongly agree in all these columns? So he said कि मैं तो इस हिसाब से पढ़ रहा था कि आज की जनरेशन को ये सब करना ही चाहिए if they really want to be in academics. So this is social desirability. सबसे ज्यादा होती है सर बच्चों में. आप बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, they would always project themselves to next position and they will answer the question here, and this will induce a good kind of error into your surveys. इसका सर एक ही इलाज है. इसका इलाज जो सबसे ज्यादा रिसर्चर्स बोलते हैं, you increase your sample size. When you increase your sample size, the probability of gaining the genuine responses increases.
and your error will distribute over the sample. आपने अगर 300 लोग सोचे हैं, आई वुड से 150 लोगों से और भरवा लो. अगर बच्चे हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेड है तो और ज्यादा, अगर पोस्ट ग्रेड है तो फिर भी आप 50 या 100 का हमें मार्जिन उनके लिए लेके चलना पड़ता है. सो बायसनेस के लिए आई वुड से सर, और बिहेवियर जो चीज है, हम हमेशा परसेप्शन मेजर करते हैं. उस दिन भी जब द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दैट केस फ्रॉम नरेश मल्होत्रा, ट्रस्ट एक अलग चीज है, but perception about trust is a different thing. Perception about trust would be different for every individual, for everybody. मेरा perception of trust, मेरा definition of trust अलग होगा, आपका perception of trust अलग होगा, और trust अपने आप में जो है as a construct वो एक अलग कहानी है. So what we are trying to measure, whether we are trying to measure trust or we are trying to measure perception about trust. So perceptions जो होते हैं सर, वो तो वैसे भी they are very unstable. तो आज मैं कुछ भरूं उस पे, आज I am heartbroken, आज मेरा विश्वास किसी ने तोड़ दिया. सो आज आई विल बी फीलिंग सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चनर. कल मैं बहुत खुश हूँ, टुमारो आई एम अ फ्रेंड्स पर्सन, सब कुछ इंटैक्ट है मेरी लाइफ में. सो आई विल बी फीलिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर माई क्वेश्चंस. सो परसेप्शन तो एज इट इज वेरी अनस्टेबल. इसलिए हम कहते हैं एट अ गिवन इंस्टेंट, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो रिस्पॉन्सेज आते हैं परसेप्शन के लिए, हम उन्हीं को स्टडी करते हैं. इसलिए हमें उसमें ड्यूरेशन भी डिफाइन करना पड़ता है. सो आपका क्वेश्चन है कि बायसनेस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं. एट दी वेरी ऑनसेट, रिसर्चर शुड टेक केयर ऑफ इट व्हाइल डिजाइनिंग क्वेश्चंस, कि वो स्क्यूड ना हो. उन्हें सोशल साइंसेज में स्पेशली ये ट्राई करना चाहिए कि क्वेश्चंस डायरेक्ट ना हो. सिमुलेटिव क्वेश्चन शुड बी मेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ, हम किसी से क्वेश्चन पूछें कि आई एम एथिकल, हमने लाइकेट स्केल पे स्टेटमेंट दिया आई एम एथिकल, और उसको लाइकेट स्केल पे बोला स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, इसको भर दो. हु विल से आई एम नॉट एथिकल? इवन इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू अ स्मगलर, ही विल आल्सो से आई एम एथिकल. उनके एथिक्स के अपने डेफिनेशंस हैं, right? So nobody would say I am unethical. So such straight questions will always capture certain different kind of answers from everybody. Skewed है, ये पूरी तरह से 5 पे ही जाएगा. इसका आंसर कोई 4, 3 नहीं लिखने वाला, इसका आंसर सब 5 ही लिखेंगे. तो इस हिसाब से सोशल साइंसेज में we need to frame questions which can capture our responses on both sides. थोड़ी देर बाद हम स्टिमुलेटिव क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लें. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एथिकल ना पूछ के मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके बॉस ने आपको इफ दे हैव गिवन यू अ टाइम लिमिट एंड यू हैव टू अकम्प्लिश अ वर्क विद इन दैट टाइम लिमिट अंडर प्रेशर, विल यू ब्राइब एनी ऑफिशियल टू गेट योर वर्क डन? आप ब्राइब करोगे किसी ऑफिशियल को? नाउ व्हाट विल यू से? अंडर प्रेशर आप एथिकल हो कि नहीं हो? ओके, सो सच काइंड ऑफ सिमुलेटिव क्वेश्चंस, कभी पॉजिटिव साइड में, कभी नेगेटिव साइड में, you should ask so that multiple different kind of responses you can capture. Then at the respondent side, अगर आप किसी का क्वेश्चनर भर रहे हो, so I would always say please पढ़ के भरो. Genuine responses, garbage in, garbage out. If you are giving somebody a bad kind of response, bad analysis would come out. And same goes for us also. So usually सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एरर्स की जब आप इसको ईमेल के थ्रू भरवाते हो. सो आपको ईमेल में हमेशा मार्जिन रखना ही पड़ता है मोर सैंपल का. हाँ, आप उसे फिजिकली जाके भरवा रहे हो, सो देयर आर लेस चांसेस दैट यू विल गेट बैड डेटा, because people when they fill in front of you they have a different psychology, when they are filling without you they have a different psychology. So if you are getting them filled yourself, it will be a better result, I would say. So I guess biasness depends on both, and we as researchers, we have this responsibility of addressing it. Okay, so inappropriate instruments that if you are using in your study, they lack vigor, rigor, and poor quality of data, just as we discussed. So okay, sometimes for example, agar main aur mera co-researcher, okay, one important point in writing systematic reviews and meta-analysis is this, jo ki maximum experts bolte hain ki try to have 2 or more people to write paper with you when you are writing systematic review. एक बंदे के बस की बात नहीं है मेटा एनालिसिस करना या सिस्टमैटिक रिव्यूज करना. यू कुड सी द वॉल्यूम ऑफ द पेपर्स दैट यू हैव टू गो थ्रू इवन व्हेन यू हैव टू शॉर्टलिस्ट देम. ओके, सो टू डिसाइड द कैप्स, क्या कैटेगरी लगा के एक्सट्रैक्ट करूं, वो कैटेगरीज को डिसाइड करना. तो यू विल बी नीडिंग को रिसर्चर्स विद यू शुड. ठीक है, सो नो, आई वुड नॉट फाइंड एनी सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर दैट हैज बीन रिटन बाय ओनली वन बंदा. There are multiple authors who have written these systematic review papers and make sense. Okay, so for example, if you and your co-researcher are of some different kind of assumptions, you are trying to work on a similar field, so but your ideas are not matching, so a formal scoping exercise
with your co-researcher would be should be good, so that you can clarify your goal and can come at a sort of mediation wala point, so that you can access these potential practical problems. Then they always say that if you do not have much kind of review, much kind of literature at the back for designing questionnaires, first do qualitative study. Focus groups है हमारे पास, उनकी भी अलग techniques हैं, so that you can explore your given territory, okay, and you can map the key areas for further study. So basically questionnaires के लिए भी review is very very important. Without review you cannot do it. So questionnaires will be appropriate only if you use a mixed methodology. Mixed methodology, though I believe they are the key to address any kind of study these days. Then meaningful answers should be given by research participants. Okay, there are two kinds of questionnaires, guys. One is self-constructed, जो आप खुद बनाते हैं questionnaire. Then there is standardized questionnaires. Okay, so कभी-कभी we get confused about कि मैं अपना questionnaire खुद ही बना लूं या मैं standardized questionnaire choose कर लूं. दोनों के अपने pros and cons हैं. I would say अपना questionnaire आपको तब choose करना चाहिए, तब बनाना चाहिए when you are in the initial exploratory phase of your study. जब आपको लगे कि आपकी study के लिए review बहुत ज़्यादा नहीं available है. Okay, so you conduct your own qualitative study with the help of experts and with the help of whatever जो भी literature given है उसके basis पे, and then you explore your area and you develop your own questionnaire जिसकी हमें reliability, validity establish करनी पड़ती है. Okay, but then there are pitfalls also. This is one example that has been given to ascertain the pitfalls of designing your own questionnaire. So when you include your own kind of perceptions, your own kind of biases into the questionnaire, then they can result in bad analysis. Okay, obviously biasness आ जाएगी, skewed हो जाएगा data अगर आपने उसे subjective अपने biasness के हिसाब से उसको draft किया है. So it is always a good idea. Recently I was studying, so they say the majority of the young authors and the latest authors say it is always a good idea to use the already established, previously validated questionnaires for your study. It will save your time, it will save your resources, plus you will be able to compare your findings with their findings. Okay, so दूसरे का standardized questionnaire है. For example, अगर employee engagement में Shoffley and Baker vigor, dedication, absorption वाला जो scale है वो standardized है. वो वाला scale मैंने इंडिया में करके देखा अपने employees पे, तो कुछ results आए. So I can always compare my results with their results. Okay, because मेरे पास एक validated study है उनकी भी, so I can always compare our results and we can draw out the factors जो भी responsible है. Right? You just when you are writing this, when you are mentioning the methodology कि आपने कौन से instruments choose किए हैं for conducting your study, you just need to give the outlines of the instrument. उनकी reliability क्या निकाली, किसने बनाया, validity कैसे निकाली, उनका sample कौन था, and etc etc. You don't need to give all of the details of their papers. Okay, easy to publish in the sense standardized questionnaire की audience ज़्यादा होती है obviously because they are standardized. So आप उन्हें अगर select कर रहे हो, adapt कर रहे हो अपने culture में, so the authenticity of the scale, authenticity of your analysis increases because they are well known, they are renowned, they are already established. अगर आप अपना ही स्केल डेवलप कर रहे हो, इट इज अपना स्केल डेवलप करना अपने आप में एक पूरी स्टडी है. सो अगर आप उसको कर रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी पे लोग ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, रिव्यूअर्स ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, रिव्यूज भी ज्यादा आ सकते हैं और उसकी मेथोडोलॉजी, उसका एनालिसिस आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्क्रीट रखना पड़ता है. ओके, इससे वैलिड एंड रिलायबल से पहले आई वुड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेट्स जो कि आप क्वेश्चनर में यूज कर सकते हो. स्टेटमेंट्स विद टिक बॉक्स कैटेगरीज, आपने उनको डाइकोटोमस 2 ऑप्शन या मोर देन 2 ऑप्शंस आप उन्हें देते हो एमसीक्यूज की तरह, एंड दे कैन टिक देयर रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. Then we have rating scales, 5-point rating scales, 7-point rating scales. Usually we use Likert for this. So we quantify their perception. हम उन्हें नंबर दे देते हैं 1 to 5 and जो भी per statement वो अपना response देंगे उनको भी record, right? Then visual analog scales, हमने एक number line सा बना दिया है, दोनों तरफ अपने options mention कर दिए हैं, and then we write them to make a cross, ठीक है, across the continuum. Okay, so इसमें हम उन्हें conceptualize कर सकते हैं कि वो किस तरह fall कर रहा है. Then we have symbols. Symbols जो होते हैं, ये वाला आपने देखा होगा डोमिनोज का, अगर फीडबैक देखा है तो डोमिनोज के फीडबैक में दे आस्क यू, ऐसे वाले स्माइलीज दे गिव यू टू मार्क. Okay, then open-ended items. Open-ended are good for qualitative studies.
आप फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर रहे हो, डेल्फी कर रहे हो, डेप्थ इंटरव्यूज कर रहे हो, देन यू हैव ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू कैप्चर द मैक्सिमम परसेप्शंस ऑफ पीपल. ओके, वहां पे ओपन आइटम आर गुड. यूजुअली we combine the interval scale, the Likert wala scale with the open-ended questions. Sometimes close-ended designs, close-ended guys, ये सारे options है ये close-ended हैं. Close-ended का मतलब I'm sure we know the difference between open-ended and close-ended. Open-ended questions जैसे कि हमारा last वाला option है जिसमें आपने छोड़ दिया उनके ऊपर. You are seeking reply from the respondent. ठीक है, now they whatever they'll tell you, you will analyze that subjective. बट एक क्लोज एंडेड में आपने उनको खुद ही ऑप्शंस दिए हैं कि आपको भाई ये 4 ऑप्शंस में से ही बताना है, केबीसी एबीसीडी, इसके अलावा बाहर नहीं जाना, अपना परसेप्शन मत दो, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस है, इसी में से टिक कर दो. ठीक है, तो क्लोज एंडेड के हिसाब से समटाइम्स वी माइट गेट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन. इस एग्जांपल में दिस कस्टमर इज आस्किंग द कस्टमर केयर people or employee that he wants to discontinue his mobile phone, so they are giving him the options. Usually customer care calls are very irritating, you must be knowing that, so they go through a number of process to lead to the customer care representative. So they will keep giving you options, so they give him these options कि क्यों आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है कंपनी का नुकसान करने का. तो दे गेव हिम दीज ऑप्शंस कि आप अपग्रेड कर रहे हो नेटवर्क में, या आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो पेमेंट, या दूसरे नेटवर्क को जा रहे हो, आप क्या चाहते हो. तो कस्टमर ने कहा कुछ नहीं चाहता मैं, मेरे को फोन ही नहीं रखना, आई एम फेड अप ऑफ द स्मार्टफोन्स, आई डोंट वांट टू कीप द स्मार्टफोन्स. अब ये तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. तो उन्होंने कहा ठीक है सर, वी आर राइटिंग कि यू कैन नॉट अफोर्ड द पेमेंट्स. सो ये जो काम होता है ये रिसर्चर्स भी काफी बार करते हैं. ओके, ये हमारे प्रोज एंड कॉन्स, ये हमारे कॉन्स में जाता है व्हेन वी आर मेकिंग क्वेश्चनर्स ऑन इवन द लाइकर्ट स्केल. इंटरवल स्केल पे भी जब अपना क्वेश्चनर बनाते हैं उसका भी ये एक डिसएडवांटेज है कि आपने उसको बाइंड कर दिया 5 आंसर्स में या 7 आंसर्स में कि उसको उन्हीं में से ही कोई आंसर देना है. व्हाट इफ इट डज नॉट वांट टू आंसर दिस, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आंसर देना ही है, तुम अपना कोई परसेप्शन बताओ इस बात के ऊपर. सो थोड़े से क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमारे पास ये प्रॉब्लम है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कि हमारा क्वेश्चनर वैलिड है और रिलायबल है. चाहे हम स्टैंडर्डाइज ले रहे हैं तब भी हमें वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक करनी है, चाहे हम अपना बना रहे हैं तो हमें बना के दिखानी है, तो हमें उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ती है. वी हैव डिफरेंट मीन्स जैसे भी हम करते हैं. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस. फॉर एग्जांपल आपने एक बच्चे से पूछा, बच्चे होंगे सबके घर में, अपने नहीं होंगे किसी के भी होंगे. सो आपने बच्चों से पूछा कि दोपहर को खाने में क्या खाया था. सो बच्चे ने आपको बोला राजमा चावल. अब आपको अंदर से पता है कि राजमा चावल नहीं बने, खिचड़ी बनी थी, लेकिन बच्चा आपको कह रहा राजमा चावल. सो आपने उससे दोबारा पूछा दोपहर को खाने में क्या खाया था. सो बच्चा भी लगे इनसे राजमा चावल. तीसरी बार पूछा खाने में क्या खाया था, हिल से राजमा चावल. नाउ उसके आंसर में रिलायबिलिटी है, ही इज गिविंग यू द कंसिस्टेंट आंसर्स. ठीक है, उसने आंसर अपना चेंज नहीं किया. आप चाहे उसे ऐसे पूछो या थोड़ी देर बाद फिर पूछो उससे कि अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता था कि व्हाट डिड यू हैव इन योर लंच टुडे, राजमा चावल. सो आप उस क्वेश्चन को इस तरह से पूछो उधर से पूछो, आपको आंसर वो वही दे रहा है. सो आंसर इज रिलायबल. ठीक है, ही इज गिविंग यू द कंसिस्टेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, चाहे आप उसे n नंबर ऑफ टाइम्स बाय डिफरेंट मीन्स आप उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो. नाउ हिज आंसर्स आर रिलायबल. वैलिड नहीं है, वैलिड का मतलब सच नहीं है. ठीक है, कंसिस्टेंट है बट वैलिड नहीं है, रिलायबल है बट वैलिड नहीं है. सो वैलिड क्वेश्चनर को हम तब कहते हैं जब हमें वही मिल रहा है जो हम मेजर करना चाह रहे हैं. व्हेन आवर कंस्ट्रक्ट इज एबल टू मेजर व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेजर. हम उससे पूछ रहे हैं खाने में क्या बनना है, हमें पता है खिचड़ी बनी है, वी आर एक्सपेक्टिंग खिचड़ी, आंसर हमें कुछ और मिल रहा है. So therefore this response is not valid. Okay, so when we are developing our instrument we are looking for a valid measure. Okay, so developed कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी कल्चर में, एक कल्चर में बनाए, यूएस के कल्चर में बनाए, इट माइट नॉट बी अ वैलिड मेजर फॉर योर कंट्री. सो हमारे जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर्स होते हैं उनकी वैलिडिटी वो क्रॉस कल्चर एस्टैब्लिश करते हैं, हेंस दे आर स्टैंडर्डाइज्ड. हेंस उन्हें आप अपने उसी कल्चर में उस पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर यूज कर सकते हो. ओके, देन रिलायबिलिटी व्हेन यू आर यील्डिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. ठीक है, अलग अलग तरीकों से आफ्टर डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम आपको वही रिस्पॉन्स मिल रहा है. मैंने अगर एमबीए ग्रेजुएट्स पे एक स्टडी कराई है आज और मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, रिलायबल है, मेरा क्वेश्चन है, मैंने रिलायबिलिटी चेक की, अभी हम चेक करेंगे कैसे करते हैं रिलायबिलिटी चेक. तो हमने उस पर रिलायबिलिटी चेक की, मेरा आंसर जो आया, मेरा क्वेश्चन रिलायबल आ गया. ठीक है, रिलायबल का मतलब ये हुआ अब मैं इस क्वेश्चनर को जब दूसरे इंस्टीट्यूट के एमबीए स्टूडेंट्स पे कराऊंगी तो आंसर यही आएंगे.
तो similar kind of findings will come. Okay, it will yield consistent results. Similar का मतलब ये नहीं है guys कि उनका बिल्कुल response वही है. अगर मान लो X population ने positive response दिया तो Y भी positive ही दे रहा है. नहीं नहीं, Y negative दे सकता है, लेकिन results consistent kind of आएंगे. The understanding of the questionnaire, the kind of responses that we will capture, they will be of consistent nature. Okay. So standardized questionnaire is one that is written and administered so that all participants can ask the precise same questions in the similar format in the concerned sample. ठीक है. Standardizing say we usually increase our reliability. Are we clear with reliability and validity? Then we'll proceed to reliability. How do we do it? Guys, if you can mute your microphones, please. Khushbu, you have been muted. I guess somebody. Yes, Khushbu, you can again say. I think you are unmuted now. हाँ जी मैम, हाँ जी. Thank you, ma'am. Okay, Rashi asked, tell me please, can we add questionnaires in descriptive papers? Rashi, there is no point in adding your questionnaires in descriptive paper. Descriptive का मतलब मैं समझ रही हूँ आप conceptual paper बोल रहे हो. Conceptual paper are nothing when we conceptual paper में हम काफी सारी theories को assimilate करने की कोशिश कर रहे हैं, right? So there is no point who we are asking our questionnaire to. Questionnaires are usually an instrument when we are doing this primary study. Okay. और आजकल when we are doing our qualitative study which is again primary. So descriptive papers यानी कि secondary papers, conceptual papers में questionnaires की जरूरत नहीं है because we are not meeting respondents there. We are just at our end being a researcher, we are trying to assimilate all the theories. Okay. Aditi says, ma'am, questionnaire via Google form is best or we should hand over paper forms to people? Both ways are fine if you know your audience. अगर आपको पता है कि जो आपके respondents हैं वो आपको Google email के through they can give you genuine responses. For example, अगर मैं fellow scholars पे काम करा रही हूँ, so now they represent a different kind of field. They understand the pain. Okay, so you can expect them to fill genuine responses. Then it is fine. But if your audience is students, okay, I would say या फिर your audience is distant from you, they are not in your close vicinity, आपको कहीं दूर address कराने हैं, कहीं दूर भेजने हैं. जैसे मेरे केस में I had to ask these questions from the faculty of government, private and deemed universities in Delhi NCR. अब NCR की definition is still 100 kilometers of Delhi. जीन तक दिल्ली एनसीआर मान रहे हैं वो, ठीक है, नीमराना तक दिल्ली एनसीआर चल रहा है. सो नाउ यहाँ से if I'll send them some kind of questionnaire, first of all मेरा response rate बहुत कम होगा. I might not get my questionnaires filled in time, है ना, मुझे वापस नहीं मिलेंगे टाइम से. दूसरा क्या पता वो किसी और को फॉरवर्ड कर दें, यार तुम भर के भेज दो इसको, मैं नहीं भर रहा इसको, ठीक है. So you will not be able to see the genuinity of the responses. I walked down 42 universities and I asked people to fill my data. That is how I got 700 का data. So when you go there, first of all आपका response rate बहुत high हो जाता है. आप एक ही बार में आपको 15 क्वेश्चनर तो भर के मिल ही जाते हैं, ठीक है. आप उनको कहीं भेजोगे आपकी ऑडियंस को तो you might not get 1 or 2 even in the same day. So response rate बढ़ जाता है. प्लस मुझे ये पता होता है कि उन्होंने मेरे सामने भरा है. So बहुत ज्यादा उनमें प्रॉब्लम नहीं होती. जब मैं उन्हें अपने आप एक बार फर्स्ट हैंड उनको देखती थी, सो मुझे पता लग जाता था कि अच्छा थोड़े थोड़े फील्ड्स मिसिंग है, बट स्टिल ठीक है. मैक्सिमम वो भरते भी थे, इनवैलिडिटी भी कम थी उनके अंदर और अनफिल्ड भी मुझे कम मिले. मैक्सिमम मुझे सही जेन्युइन रिस्पॉन्सेज आई कुड गेट व्हेन यू फिजिकली एडमिनिस्टर देम. ओके, सो द टर्म दैट वी यूज
अपने क्वेश्चन को देने के लिए, इट इज व्हेन यू सेल्फ एडमिनिस्टर योर क्वेश्चनर्स टू योर रिस्पोंडेंट्स फॉर योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Importance of questionnaires in meta-analysis. Sir, importance of questionnaire in meta-analysis is when you are trying to combine your meta-analysis with the quantitative study. जो मैंने आपको टॉप अभी पेपर दिखाया था टैम वाला, उसमें दे हैव कंडक्टेड सेम आल्सो आफ्टर meta-analysis. So meta-analysis के लिए you only need the secondary papers जो ऑलरेडी लिटरेचर बेस्ड पेपर्स हैं. हाँ, अगर आप आगे सेम लगाना चाहते हो, कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस लगाना चाहते हो, then you conduct. Then you have your questionnaires, you get your data filled from the primary, from your respondents first hand, and then you conduct your you apply your desired tools. What sample size educate for research paper? 100 responses are a good number. Usually research बोलती है, studies बोलती हैं n greater than 30 is a larger sample. But yes, I would agree 100 is a good number. और हम thumb rule लगाते हैं guys, very simple. जितने number of question, जितने number of items हैं आपके questionnaire में, स्पेशली वी डू इट फॉर फैक्टर एनालिसिस, कि आपने अगर अपने आप कोई क्वेश्चनर बनाया है और उसमें आपने 10 स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 5. 50 का डेटा शुड बी गुड फॉर 10 आइटम्स. सो दैट इज हाउ दे कैलकुलेट थंब रूल वाइज. सो स्टिल आई वुड से 100-120 शुड बी is a good sample size for conducting study, for conducting analysis for research papers, for sure. Not less than 100 you should address. Okay, let's go back to reliability. I want to show you through SPSS today. I guess मेरा SPSS download भी हो गया. Okay, then comes split half. Split half is जब आपने पहली बार किसी से क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल आई लाइक माय ग्रुप, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माय टीम. फिर बीच में आपने 4-5 क्वेश्चंस अलग अलग पूछे, थोड़ी देर बाद फिर पूछा आपने, फिर थोड़ी देर बाद पूछा आई डिसलाइक माय टीम, आई डू नॉट वांट टू वर्क विद देम. नाउ हाउ द पर्सन विल रिस्पॉन्ड. अगर उसने आई लाइक माई ग्रुप में स्ट्रांगली एग्री लिखा है, थोड़ी देर के बाद वो कुछ और तो नहीं लिखा अपनी टीम के बारे में. सो दैट इज हाउ यू गेट टू नो कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है व्हेन ही इज आंसरिंग द क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स इन द गिवन फॉर्मेट. सो आप उसी तरीके से फॉर्मेट में डालते हो अपने क्वेश्चनर को, अपनी स्टेटमेंट्स को, दैट ही गेट्स थोड़ा सा सोचने पे कि हाँ मैंने ऊपर क्या लिखा है या मेरा क्या परसेप्शन था, या वो अगर फ्लो में भर रहे हैं, सो यू विल गेट टू नो द कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर. देन कम्स गाइस इंटरनल कंसिस्टेंसी, जो कि मेजॉरिटी लाइकर्ट स्केल में यूज करते हैं. लाइकर्ट स्केल हम सबको पता है. इंटरवल स्केल, दो कंट्रोवर्शियल, इसको कुछ लोग ऑर्डिनल स्केल भी बोलते हैं. इंटरवल स्केल हम इसको यूजुअली इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन इंटरवल स्केल नाउ. इसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्स्ट, द यूनिट डायमेंशनलिटी शुड बी देयर. यूनिट डायमेंशनलिटी का मतलब है एक बार में एक कॉन्स्ट्रक्ट के फैक्टर को एड्रेस करता है, ठीक है. सो वन कॉन्स्ट्रक्ट शुड बी एड्रेस्ड. देन यूनिट डायरेक्शनलिटी, एक डायरेक्शन के दो हमारे जो क्वेश्चन है वो होने चाहिए. दो यूनिट डायरेक्शनलिटी का मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट से नहीं है. अगर आपने लिखा है कि आई वांट टू वर्क इन ग्रुप्स, आप थोड़ी देर बाद उसको एक दो नेगेटिव स्टेटमेंट से भी पूछ सकते हो, ठीक है. बट दी क्वेश्चन स्टेटमेंट शुड बी टुवर्ड्स द टीम ओरिएंटेशन. टीम ओरिएंटेशन की ही बात होनी चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि टीम ओरिएंटेशन पूछते पूछते मोटिवेशन पूछने लगे. सो वन काइंड ऑफ डायरेक्शन शुड बी देयर. देन सेम स्केल फॉर ऑल स्टेटमेंट्स. ऐसा नहीं कि मैंने 10 स्टेटमेंट पे अगर बनाया तो मैंने 2 बनाई एमसीक्यूज पे, 2 बनाई मैंने येस नो पे, और बाकी की बनाई मैंने 4-6 व्हाटएवर लाइकर्ट स्केल पे. नहीं, इफ आई एम चूजिंग लाइकर्ट स्केल फॉर माय क्वेश्चनर, तो मेरी सारी स्टेटमेंट शुड बी ऑन लाइकर्ट स्केल. मिनिमम वैल्यू फॉर एसर्टेनिंग रिलायबिलिटी इज 0.7. और हमारा बाइबल पेपर, इसके लिए हम यही पेपर रेफर करते हैं जब हम लिखते हैं कट ऑफ. जब हम लिखते हैं कि मेरे पेपर का मेरे क्वेश्चनर का क्रॉनबैक अल्फा इतना आया, तब हम ब्रैकेट में लिखते हैं ननली ने बोला है 1978 में कि 0.7 से ज्यादा है तो रिलायबल है. दिस इज द कट ऑफ वैल्यू फॉर योर रिलायबिलिटी. लेट्स काउंट इट, लेट्स डू इट. एसपीएसएस अगर किसी के पास है तो वो साथ में कर सकता है. And it will always be impossible until you will do it yourself. Said by a wise man. Okay. Yes, it is there. Let's see. एक डेटा फाइल है मेरे पास, so I will forward the data file to you also for practice sake. Though you can try this on your data files too. आपके पास डेटा फाइल्स होंगी कुछ रिसर्च पेपर्स की, आप उस पर कर सकते हो.
Give me few seconds, guys. बस run हो जाए, then we'll do it. ओके, SPSS पहले फ्री आता था, अब SPSS फ्री नहीं है. ये शायद ट्रायल वर्जन डाउनलोड हो रहा होगा कुछ दिनों के लिए, बिकॉज दे हैव टेकन माय इंफॉर्मेशन. और SPSS नकली वाला डाउनलोड मत करना अब. दे हैव बिकम क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड दे कीप चेक्स. आपके इंस्टीट्यूशन के पास अगर है उसका सब्सक्रिप्शन, तो आप वहां से उनसे ले सकते हो. In the meanwhile, any participant wants to ask directly any question or query to the our resource person, he or she can, ma'am, because some participants said of to me course. he or she is not able to write the message in the chat box. Yesterday somebody said it. Right? Yes. So please kindly ask directly in the meanwhile. Okay. Guys, please shoot. No, don't shoot. No, shoot the questions. I'm unable to see the chat box also, so if you are writing, you can speak instead. Hello. Yes, please. Can you give an example of unidimensionality and unidirectionality, in Likert scale technique? For example, sorry, what's your name? I'm unable to see. I'm sorry. I'm Dr. Anita. अच्छा, okay. Dr. Anita, for example, unidirectionality के लिए I said कि for example हम आपसे पूछ रहे हैं कि टीम ओरिएंटेशन के लिए आपका क्या परसेप्शन है. Okay, I'm so sorry, can you explain it in English? Sorry. I belong to South, so can you explain it in English? Sorry, ma'am, I'm sorry. Yes. Of course I can. So for example, ma'am, if I've administered a questionnaire to you and it is about the team orientation. Okay, so I am giving you the statements like whether I want to be part of this group, strongly agree to strongly disagree. Okay, I would like to take up team projects instead of individual projects, strongly agree to strongly disagree. So unidirectionality means your question should be led to one direction of the construct. They should not be haywire while calculating something. For example, if it is about team orientation, they should go in the direction of team orientation. You should not talk about the individual contribution or motivation or anything else. So unidirectionality should be there. The question set should be about it should be towards one direction only. Right. And unidimensionality is when only one kind of construct or one kind of dimension or factor has been addressed. For example, every kind of factor, they say they should have 5 to 6 statements per factor. So Likert scale is applicable. Likert scale, if I have taken this one complete dimension, so Likert scale should be applicable to all kind of items. So unidimensionality should be there, that it is addressing each factor or one dimension of your construct. Okay. Right. Thank you, ma'am. Thank you. Anybody else? Guys, one small feedback. If you are making your own questionnaire, if you are self-constructing your questionnaire, then please try to have, more statements per factor or, per construct. At least try to have 7 to 8 statements, because when you perform factor analysis, they drop. Okay? Some of the parameters, they don't come in the cutoff range, and then you have to drop the items. So it won't be wise if you are left with 2 or 3, 1 or 2 items per factor. That would not yield good kind of results when you administer it to the larger public, larger masses. Okay, so take more statements per factor, so that even if they get reduced to 5 or 6, you can capture maximum perception. You get maximum perception about the given construct from the people. Okay, 1 statement, 2 statement per factors is not a good idea. So starting say you make n number of, a good number of statements per factor, so that you can have them later, even if they remain 5 to 6.
Okay, meanwhile, I should tell you that we can perform the reliability analysis through Excel stat also. Excel stat is an Excel file which has all the given functions of SPSS. Okay, again, it is a trial version. I believe Excel stat has 14 days trial version, and then it is quite expensive. I guess 52,000 rupees. So if I'm able to open Excel stat, I'll show you through Excel stat. I believe everybody has made the accounts on ResearchGate in Academia, and Publish Perish also you have downloaded. Ma'am, may I speak now? Yes, please. Ma'am, yesterday you gave me your ID, Gmail ID. Right. That I Right. filled in ResearchGate. Again, Okay. the reply was same, that it is personal ID, institutional ID is required. So what should I do there? Institutional ID is required. Institutional ID is required for you or for the reference one? To sign in, institutional ID is required. Okay. When I made this account, I made it through personal ID only. I guess there is some option for one-time sign in or something like that. It is there still, or it is not there? Ma'am, they ask so many questions like, are you academic or student? You are a researcher, you are not a researcher, like this type of questions they ask. I clicked on academic or professional like this. So they Okay. are asking institutional ID. Okay. I am assistant professor. I filled the ID of my college also. Right. But Right. that was also not acceptable. And then What what error it is giving after putting that official ID? They are asking for institutional ID. what she has to do, she has to go and ask the computer department to authenticate her institutional ID. I had the same problem when I signed for Google Scholar. Then sir it took a while, but you had to get round from the college where you working as Okay, a sir. AD. You asked Right, first right, ask right. actually. Ad hoc people have problems. They are not giving it details because what happened is get recorded everything. Yeah. Ma'am, you might be working in somewhere else, na? I think. I am? Me? I mean, ma'am, who's having some problem? You might be working somewhere in the college, na? You should have the college ID. Okay, ma'am, I will ask them. Like I am in Acropolis, so I have my Acropolis ID, priyankachavla@acropolis.edu.in. No, ma'am, I don't have such an ID. I have only my personal ID. So, But ask I will them to ask create your computer ID. department. Okay, Ask ma'am. them to Okay, create thank you your so ID. much. Ask Okay, them ma'am. to create Khushbu one ma'am, for I you. have one question. Yes, please. In continuation to this, ma'am, ma'am, I have downloaded Publish and Perish. Okay. So scope for this, I have to log in with Scopus, or do I have to create my account in Scopus? You have to create your account in Elsevier. For Scopus, it will ask you to create your account in Elsevier. It is a simple process. You just have to sign in with your details. Acha. Haan. Then only I can access the papers. The Scopus one. Right. Okay. Thank you, ma'am. Okay, no problem. Uruji, Ma'am, can you open your I SPSS? went I guess to SPSS will take time. Ma'am, I went to Xavier's in Bangalore, in Electronic City.
where Yes, we sir. learn a scorecard, you know, on the Likert scale, we, as we do in the cricket Okay, sir. scorecard. That Excel, what the Excel stat is doing similar, because that Excel sheet, we developed like 3 sheets he had given to me on performance of employee with numbers 1 to 10, 1 to 5, and yes, right or wrong. Right, sir. So I can share with you tomorrow. I will send you those, maybe tomorrow, day after, those Excel data sheet that we got generated at Xavier's. Sure, sir, sure. I would be glad to see that. Okay, some people are writing in the chat box. I'll take that up. Where is it? Dr. Khushbu, there is one problem with me that my laptop is going shut down. It's take 10 minutes to restart, ma'am. Actually, battery मैंने देखी नहीं, वो immediate shutdown हो गया. तो ये I mobile am पे मैंने sending. अच्छा, okay. I was sending you the mail for that file क्योंकि मेरा भी इस पे time लगा रहा है, so we can do it from your computer. एक्चुअली रीस्टार्ट होने में 10 मिनट्स ये शो कर रहा है, तो बैटरी एकदम चली गई, तो मैंने मोबाइल पे ज्वाइन किया, तो इट्स टेक 10 मिनट्स मैम. तो Okay, okay, okay. है कि नहीं है? Right, sir. Kothari sir, we discussed these things only. Schedule come. What is the meaning of the schedule, and and what the surveys are. Survey. Yes, yes. So right. I guess I was on point when I said that. Okay. I so wanted it to run from here. No, it always, and this Excel, it takes a long time. Even I'm running out of memory. I cannot load this. Right. They're taking time. Microsoft. Guys, meanwhile, you can download this Excel stat. You can download. It is free. You just have to put in your details, your ID, your details, and then you can download it. मेरे end से Excel stat में कोई problem आ रही है, but from your screen if I can access. Meanwhile, I'm conducting this SPSS वाला thing with Urushi. Urushi 10 मिनट में अगर join, she will join us back in 10 minutes. Till then we can discuss something else, and then I will show you how to calculate reliability in SPSS. Through Excel, you can do in Excel stat. If you are able to download it, please let me know. If we can share your screen, I will tell you through that. Hello, I'm audible. Yes. Dr. Khushbu ma'am, my laptop taking 10 minutes to restart, so we can take 10 minutes, gap, or you can say break. 10 minutes break. After 10 minutes, we will join again. No, I have certain things to discuss. I can discuss those things by that time, Urvashi, and then we can join from your laptop. I'm just sending you the data file. Give me 2 minutes, and then I'm discussing something with them. Okay, ma'am. Okay. Okay, Urushi, I've sent you the data file. If your laptop
If the problem with laptop is sorted, please let me know. Then you can show your screen and we can do it from there. Okay, guys. Meanwhile, I promise that I'll discuss certain kind of tips that these good papers have been mentioning about. Okay, certain times we come across this problem in Likert scale, especially. Which type of scale we should refer to, 5.1 or 7.1. This is a common problem that we face while designing our questionnaires in this interval scale, which is quite famous, was developed by Mr. Likert. And the scales that he has mentioned, his own scales as symmetrical and asymmetrical. So he calls his 5-point Likert scale as symmetrical. Why symmetrical? Because there is 1, 2, 3, 4, 5. So if you are picking the central value, that is 3, equal kind of options are there on both sides. Whereas in 7-point Likert scale, it is also in asymmetrical kind of formats. Basically, he says that researchers are unable to fix up their perceptions. Maybe some odd number, even number psychological tactic was used by him. So he used both of these scales on the odd number category. So 5-point Likert scale and 7-point Likert scale he developed. 5-point Likert scale was developed first to capture the perceptions, beliefs, attitudes, behaviors of people. A very hit kind of interval scale. Very hit kind of interval scale in social sciences. There is no doubt everybody is aware about it. 7-point Likert scale, on the other hand, yes, Ankush, Excel start trial is for 14 days, right? So if it is running from your end, if you are able to open the Excel file, please let me know. Mine got some kind of error. Okay, so 7-point Likert scale is basically said to be more sensitive, okay, to capture the perceptions as compared to the 5-point Likert scale. They say that 7-point Likert scale captures your perceptions at all steps. Okay, so whether you are strongly agree, somewhat agree, dissatisfied, neutral, somewhat disagree, and you strongly disagree and strongly disagree. So equal kind of options on the central value, 3 here, 3 there, and the central value is neutral. Again, symmetrical one, but then it gives you more options. It gives more options to the respondents to capture their perceptions about certain kind of problem. So yes, 7-point Likert scale in theory is a good idea. You can always use 7-point Likert scale to conduct your surveys. Still, majority of the times, 5-point Likert scale has been used most of the times, maybe because of simplicity. Plus, it is also a symmetrical one, so no harm there too. But still, they say that 7-point Likert scale is a more sensitive one. So this choice is completely completely on the researcher. Okay, in the paper that I discussed yesterday and today also I mentioned, Snyder 2019. There are certain tips, guys. How you can get your literature review published. We'll discuss certain tips. And I guess my spaces is working. So I'll show you the reliability first. First things first. I don't want you to go without it. So it is running, we'll do it first. And then we can discuss the tips. Anyhow, you'll be getting the paper. You can read those tips.
sheets. I'm assuming that we are aware about the basics of SPSS as to number of variable, number of views that we have, data view and variable view, and then how do we create these SPSS sheets? Because a SPSS sheet will be shown directly. There is no tutorial as to, I'm not creating it. Sharing my screen. If you see it, please let me know. Visible? Yes, ma'am, it is visible. Cool. Okay, this is our SPSS sheet. So basically some kind of questions are there that pertains to certain factors or dimensions. There are two kind of views in SPSS, data view and variable view. So variable view give us that what question is what. So basically we give labels to our questions. We define their name that will appear on the top of the field. We assign values. 7-point scale पे है, so we have assigned these values. Strongly agree to strongly disagree. What represents what? This is an ordinal scale because there is a comparative. 1 is lesser than 2, 7 is highest, so there is a comparison between the numbers that we have assigned. So it is an ordinal scale. Then we have certain demographics. Don't get confused with the last two things. I'll tell you what are they. So always guys, when you have this Excel sheet, try to check the descriptives first. Descriptive statistics, descriptives. This will help you to get the idea for items we do it. So this will give you an idea how many outliers are there and if any kind of missing values are there. So in options you can check what do you want to see. You have various options that you can see. You continue, you do OK, and it will give you the descriptive sheet result. Okay, so we can see n is 372, so no respondent is blank. Then minimum value is 1, maximum value is 7. We have taken a 7-point Likert scale. So kahin 77 or 11, 111 is not there. So that means we have filled all the values very carefully and there are no problem with the sheet. We can close it and we can select our, now we want to show, we want to check the reliability of our factors. So please mind it, question number 1 to 4 are one factor. ये मेरा internal distribution है, this is my internal distribution. 1 to 4 is one factor, 5 to 10 is one factor, and 6 to 13. Okay, 5 to 10 and sorry 11 to 13 is my another factor. So let's do it factor wise. So we go to analyze and we go to scale. In scale there are options, so we choose reliability analysis. So I said first four items comprise my first factor. Okay, so I want to check the reliability of my first factor, which is comprised of 4 items, first 4 items. My model is alpha, Cronbach alpha we are trying to calculate. Cronbach alpha is the measure of internal consistency. Okay, internal consistency reliability को measure करने के लिए we use Cronbach alpha. So Cronbach alpha is the measure of my internal consistency. We'll go to statistics and we select this scale if item deleted. Okay, I'll tell you why. I hope you are writing these steps or doing something with it because I have not captured these steps anywhere. I'm just showing you right away. So you select this checkbox, scale if item deleted, and you continue. Click OK. So you can see the Cronbach alpha value is 0.914, whereas the cutoff says, Nunnally's cutoff says 0.7. So we are good with reliability. Our reliability is fine for the questionnaire for these 4 items. This factor, okay. Number of items 4, reliability is 0.9.
well within the range, so we can go for it. Now, what is there? We selected that particular checkbox which said Cronbach alpha if your item is deleted, right? So this table gives you an idea how to improve your reliability, or what would be your reliability if certain item is deleted. So if you delete question number 1, your reliability would be this, less than 0.914. So no point in deleting anything. These all are less than 0.914, my original Cronbach alpha. So there is no point in deleting any of the statement. As it is, as a researcher, you have to check whether a statement should be deleted or not. It is just a software. It is comparing the numbers. It is calculating the correlations, and is checking the quantity, whatever numbers your respondents have been giving. So as a researcher, it is your duty to analyze the statements first, whether it is they are deletable or not. So okay, no problem with this. Then we go. Let's check the reliability for the second set. We go to analyze. We go to analyze, scale, reliability. Now we take next set of statements. Sorry. We will send them again and we select 5 to 10. So this is my second factor. Again, it is already selected. Continue. Okay. Ma'am, do we have to check the reliability factor wise, or can we take all together? Ma'am, it is always wise to go factor wise. As we discussed, Likert scale is unidimensional. So you should go factor wise. Each factor. For each factor, you must calculate your Cronbach alpha. Ji. And then overall, we can do average, or you can put all the factors together. But usually it takes average. Okay. So now, guys, here you can see our Cronbach alpha is 0.453. Now 0.453 is quite below our cutoff range of 0.7. So how to improve it? Now our SPSS is giving us suggestions about it. That if you delete question 5, it would be reduced further. If you delete question number 6, then it would be 0.738. But now we need to see whether we should delete our question number 6 or not. Now question number 6 is, buying a new product that has not yet been proven is usually a waste of time and money. So basically might come from a person who does not like to experiment with the products. Okay, might be a loyal kind of customer. So buying a new product that has not yet been proven is usually a waste of time and money. So if we, okay, now this statement might be important for your study because it is about the brand experiment. So what if I try to capture it from a different angle? So in my example, instead of asking this question like this, what if I ask this question in a different manner? Let's see. So you take 5th and 7th, 8, 9, 10. And this 6th one that I have framed in a new format. Okay. It must already be selected. You run it. Now you can see your Cronbach has improved. Right? So new statement was when you have asked it in a not negation way. Okay, so one of the properties of Likert scale, unidirectionality. If you ask your question in one direction, question number 6 is not visible here. It is basically about that, you should always experiment with the new brands to check the new flavors in the market. So now to this statement, the perception of the respondents would be less complicated, and they might have intrigued and they might have interpreted your statement in a negative way. Okay, so hence there was some problem with it. So you thought, okay, if you have introduced the new format of your questionnaire, your Cronbach alpha has improved a lot, including the question number 6. You did not have to delete question number 6. Including it, you are getting a good Cronbach alpha. Now you can improve it if you delete question number 7.
So question number 7 says, if people would quit wasting their time experimenting, we would get a lot more accomplished. Okay, quite complicated again. What if we delete it? This is question number 7. Yes, it has been improved. It is 0.877 now. As it is, the question was complicated and was not adding to the positive dimension of the construct. So we can see the Cronbach alpha has improved 0.877 and none of the values now depicts more value than it. Even if you delete any of these statements, it will not be more than 0.877. So quite good. We are good with this. We have 5 statements to represent our one factor, one dimension. And we have checked the unidimensionality, unidirectionality also. So we are good with Cronbach alpha for these 2 factors. Similarly, you can calculate your Cronbach for the 3rd factor also. Okay, if you want to take the Cronbach for the whole questionnaire, either load all of them or it will give you now factor wise average. You can average these 3 factors and you can get the Cronbach alpha for your complete questionnaire. When it is a 0.9, 0.8, then you can be pretty sure that the reliability of your whole questionnaire is fine. Are we there? We can calculate Cronbach alpha for our questionnaires now. Similar options would be given in Excel stat. If you will run Excel stat, upper descriptives, there would be a tab known as descriptive, and in descriptives you can go to reliability and you can select the range of your questions, select the range of your responses on which you want to calculate your reliability, and then you can click OK and you will get these similar numbers. Even if you want to check the same data on Excel stat, you can do it. It will give you similar results for each factor. Are we there, guys? Any problem in calculating reliability for your questionnaire or in designing questionnaire? No. I will give you all these files. I will give you these data files also. So through these data files you can practice. Okay. And for that matter, jinka bhi Excel stat, if somebody has got the Excel stat on their desktops, you can run your data on the Excel stat. Similar data you can run on Excel stat. You just need to copy paste and selecting the given columns, question number 1 to 4, you can calculate the reliability. It will be same. It will give you a similar kind of table also. So Excel stat is only for 14 days. I would suggest when you have these softwares which are there on trial for a limited number of time, 14 days, 30 days, you download them when you are at the verge of your doing some kind of analysis. Excel stat you can do it, and you can do it for your analysis sake or for practice sake. SPSS you download when you will be needing it, because now it is on trial version for 30 days and they are not free now. Okay. So certain tips that has been that have been discussed in the papers are usually about they are usually talking about the quality of the review paper. So basically when they see that nothing new has been contributed from the author's side and it lacks details, it lacks the methodology of how you selected papers, how you shortlisted the papers, there is no clarity about it. Usually reviewers do not get impressed by such things, and they usually reject the papers on that criteria. So for the things to get done, to publish better, I would say try to be more systematic, include all the details that are relevant to the studies, include all the exclusion criterias also, and always mention your numbers. First you got these many papers in a list in the database, then out of them after exclusion 1 you got these many, after exclusion 2 you got these many, and if you go step by step, for writing step by step you have to think logical. Okay, your thoughts becomes your actions. So the way you think, it only will be visible in on ink and paper. So start thinking logically when you have to frame something. If you are hazy in your mind, if you are blurry in your mind, you'll not be able to write it logically also.
Okay, so try to think logical, try to go systematic, and then you can write it in the similar manner. Try to team up with people who are of your similar zone, who belong to your similar fields, disciplines. Try to write with them and try to meet similar people. So 2 plus 2 is always 5. Synergies always work better than individual efforts, I would say. We are living in an era where people are working cross-culturally, across boundaries, across nations. So you can always team up with certain authors if you feel, but then you have to show your utility also. If you have picked some international author to work with, they are happy to work with good people, work with sincere, hardworking people. They will never say no. But then if you have a reason to work with them, then they should also have a reason to work with you. Okay, so you gotta show your sincerity to them. World is full of beautiful people, full of helpful people. During PhD, there would be moments when you'll feel that people are not helpful and they're not filling your questionnaires carefully, and you're not getting genuine responses. My advice as a researcher is, do not lose hope. Okay, try to reach out to more people in the same domain. You will get your results, and the more sample you increase, the more number of people you include in your study, of course, of the similar target population, you will get fair results. Okay, error will be distributed. You might get more genuine responses. In research, you have to be more hopeful, more optimistic than to be pessimistic. You cannot think, if I'll get 50 more filled, out of those 50, 30 will be wasted because people are not filling them carefully. No, you should always think that if you are getting 50 more done, you are going to get 45 plus genuine responses. There can be an error rate of only 5%. Only some kind of 4 to 5 people would not be filling it ingenuinely. So be optimistic, and I'm pretty sure we all are capable of writing good. We also are in the journey of publishing better. So let's think better, write better, and maybe all live longer. Uh, Please take good care of yourself. And if anybody wants to ask something, we can take up the queries. Today's data, all files, questionnaires, I have included 2 papers of mine also. No, I'm not boasting about myself. मुझे कोई commission भी नहीं चाहिए. I felt that those 2 papers are relevant to the literature review. One has been published in Emerald. It is a literature-based paper. I try to summarize some theories pertaining to my area, engagement and faculty engagement. So one is that some kind of tables have been made addressing the gaps, plus a certain kind of small meta-analysis we did, crisscross kind of meta-analysis we did. So it is there. The another one is that I was sharing the other day on learning analytics that we have written with the international authors. So it is an SSCI paper. You can also refer it. PLS SCM, the technique, how should we write SCM? When we have performed our analysis in PLS SCM, you can take that paper and you can draft your analysis in the similar way. So go enjoy. Happy reading, guys. We'll meet on valedictory, I believe. And if you have anything to ask, I'm here. You can ask me. You have my email ID. If you can connect later on, you can connect with me. Any participants, any query, any doubt wants to ask Dr. Khushbu ma'am? Okay, so I have sent the data file which is sent by the Dr. Khushbu to all the participants. And Dr. Khushbu, thank you so much. All 3 sessions were very, very useful and knowledgeable. Give us practical aspect also. Even all 3 sessions, even very theoretical based. So thank you so much, ma'am. And from tomorrow onwards, Dr. Irala will be our next resource person for next 3 days. So hope you all will enjoy with him also. So thank you so much, Dr. Khushbu ma'am. Thank you. Thank you, Rushi. Thank you so much for organizing it well. I could never feel that you are not there sometimes. You are always there. Thank you so much for being there. Thank you, ma'am. I'll see you on valedictory, I believe. Great job, Khushbu, and thank you all the participants. Will continue with the FDP for the next 3 days, and we have a new resource person.
as she's already been saying that happy reading and happy publishing. So let's keep up that spirit and also start learning happily. Right, Thank you ma'am. very much, all the Thank you guys for participants. being patient listeners. You guys being wonderful throughout. And I believe we always develop bonds when we meet with each other. So from here, our journey can start. We will be knowing each other better and we'll be moving together further in the area of research or non-research. Thank you for being there. Thank you so much. Have a happy evening. Bye. Thank you, Urvashi. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. So from tomorrow onwards, Dr. Irala sir will be with us. So we'll see you all tomorrow. Okay, bye everyone. And good evening again to all of you. नल कब चला गया गुड़िया? मैंने कहा नोजल का नहीं बंद